डिस्कस करिया मॉक टेस्ट 16 क्वेश्चन नंबर 1 बिल्डिंग मटेरियल्स क्वार्टजाइट इज ए व्हिच टाइप ऑफ रॉक क्वार्टजाइट हो जोटे रॉक रो क्लासिफिकेशन जो देखिबा फिजिकल क्लासिफिकेशन जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन केमिकल क्लासिफिकेशन तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन आर्जिलेसियस रॉक सिलिसियस रॉक कैल्कारियस रॉक तो क्वार्टजाइट टा गोटे को कैटेगरी जीवो सिलिसियस रॉक SiO2 कंटेंट अधिका ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम द इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू सैंडस्टोन एंड limestone belong to which types of rock sandstone और limestone को टाइप रॉक तो रॉक रो क्लासिफिकेशन जदि हमें देखिबा गोटे होची हमर फर्स्ट होची इग्नियस रॉक जेतेबेले लाभा बा मैग्मा हमर बाहरी थाए गोटे होची अर्थ रो सरफेस बाहर आसी ठंडा हेई थाए आ गोटे होची अर्थ रो सरफेस भितरे ठंडा हेई थाए अगेन आ गोटे कैटेगरी अछि जदि किछि अल्प डेप्थ रे ठंडा हला ताकू कोन कहबा किछि गोटे अधिका डेप्थ रे ठंडा हेले ताकू हमें कोन कहबा आ गोटे हाइपोबासल रॉक भी अछि तो सेडा होची इग्नियस रॉक रो कैटेगरी इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव दैट इज योर इग्नियस रॉक जोटा होची हमर ग्रेनाइट बासल्ट बट सैंडस्टोन आउ लाइमस्टोन ए माने को कैटेगरी जिवे सेडिमेंटरी रॉक सैंडस्टोन आउ लाइमस्टोन होचंदी सेडिमेंटरी रॉक कैटेगरी जिवे सेठी यदि सबुठु बेस्ट सुटेबल ऑप्शन देखिबो इंट्रिंसिक रॉक तो हबन सैंडस्टोन लाइमस्टोन होचंती लाइमस्टोन को जेमिति हमर मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस करिबा जेमिति हाई प्रेशर आउ टेंपरेचर रे that will be converted to marble so sandstone आउ limestone जेति की ऑप्शन अछि ता भितरु गोटे ऑप्शन दैट इज योर मेटामॉर्फिक रॉक हैला गोटे होची मेटामॉर्फिक रॉक आउ तो किछ ऑप्शन नै इग्नियस रॉक तो हबनी इंट्रूसिव हबनी खाली रॉक रो गोटे ऑप्शन अछि इंट्रूसिव रॉक एटा एक्चुअली सैंडस्टोन आउ लाइमस्टोन होचंदी सेडिमेंटरी रॉक आइदर सेडिमेंटरी रॉक ऑप्शन ले देइनी ये रॉक जो लिखा है सेटा सेडिमेंटरी रॉक होबा कथा ऑप्शन बी सर इंट्रूसिव रॉक ता कोन इंट्रूसिव हो जोटा कि अर्थ रो सरफेस भितरे ठंडा हला भितरे जोटा ठंडा हला सेटा होची इंट्रूसिव रॉक जोटा बाहर ठंडा हला ताको कहबा एक्सट्रूसिव रॉक 3 नंबर the indentation provided in the face of the brick रे ताको फ्रॉक कुली कहा जाय 10 into 4 into 1 number the defect in which white patches appear on the brick surface is known as what white surface जो हेते ताको कहा जाय एफ्लोरेसेंस एफ्लोरेसेंस रो तीनटा कैटेगरी अछि गोटे होची स्लाइट एफ्लोरेसेंस आउट होची मॉडरेट एफ्लोरेसेंस another one is your heavy efflorescence slight moderate heavy जो white patches हेता है due to presence of the alkali ताको कहा जाय efflorescence 5 the addition of fly ash हो जो गोटे waste material is an additive in the brick mix proportion result in what fly ash मिसेबा फल रे कोन रिजल्ट हेता है reduced drying shrinkage option B 6 which of the following is fused together to prepare the high alumina cement रे सबुठ अधिका कोन थाए बॉक्साइट थाए बॉक्साइट लाइमस्टोन जिप्सम बॉक्साइट लाइमस्टोन एंड जिप्सम मिसा जाए हाई एल्यूमिना सीमेंट रे ना सर बॉक्साइट और लाइमस्टोन सर
जिप्सम कोठो आसिला हाई एल्युमिनियम सीमेंट जिप्सम तो होउछ गोटे रिटार्डर भली काम करिवो ना इंटरनल एटा रिटार्डर ऑप्शन ए बॉक्साइट आउ लाइमस्टोन हाई एल्युमिनियम सीमेंट रे बॉक्साइट आउ लाइमस्टोन मिसा जाए आउ सेथरे इट इज द ओनली हाई हीट कैटेगरी सीमेंट व्हिच प्रोवाइड बोथ सल्फेट अटैक एज वेल एज फ्रोस्ट अटैक 7 according to IS 102621982 what should be the compressive strength of ordinary Portland cement of grade C 32.5 ରୁ add କରିବ 5 ବଢେଇ ବଢେଇ ଚାଲିବ 32.5 ରୁ 5 ବଢେଇ ବଢେଇ ଚାଲିବ 37.5 37.5 ରୁ 42.5 42.5 ରୁ 47.5 तो ये कंटिन्यूअसली बढ़ी बढ़ी चलिए ए बी सी डी ई सी रे लेख चलिए ताले ग्रेड सी विषय पचार ए बी सी ताले 42.5 रू 47.5 ऑप्शन डी 8 Which of the following physical inspection test apparatus is used for determining the cement initial and final setting time? हाइकाट apparatus हाईकाट apparatus यूज करा जाए for both consistency test में भी यूज करा जाए और इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम भी यूज करा जाए हाईकाट apparatus लीच एटलस apparatus यूज करा जाए कहाँ पे साउंडनेस साउंडनेस जदि लाइन पाई साउंडनेस हैला फ्री लाइन पाई ताले लीच एटलस apparatus जदि एक्सेस मैग्नेशिया पाई हम चेक करछोनी देन ऑटोक्लेव टेस्ट आउट होची लीच एटलस फ्लास्क जोटा होची स्पेसिफिक ग्रेविटी पाई यूज करंती ब्लेंस apparatus यूज करंती का पाई Kindness of फाइननेस पाई Proton 9 The operation of removing humps and hollows of uniform concrete surface is known as what? Crawling ये सब होचे फिनिशिंग रो ऑपरेशन गुडा फास्ट हमें कौन करबा स्क्रीडिंग reading स्क्रीडिंग होची कौन जति के एक्सेस कंक्रीट अछि ताको हमें रिमूव कर देबा तापर होची फ्लोटिंग स्क्रीडिंग परे फ्लोटिंग फ्लोटिंग होची कौन गोटे काठर पट्टा भली थिबो ता ऊपर गोटे हैंडल लागि थिबो ना जति के इरेगुलारिटी अछि सरफेस ऊपर ताको हमें बाहर कर देबा नेक्स्ट ऑपरेशन होची जोटा करोनी साहाय्य रे दैट इज अ ट्रैवल ताको हमें कहबा ट्रैवलिंग देन होची फिनिशिंग तो ऑपरेशन ऑफ रिमूविंग हम्प्स तो को कैटेगरी जीवो was reading of sir. रीडिंग कैटेगरी जीवो ऑप्शन बी 10 श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट का सहित डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सीमेंट कंटेंट श्रिंकेज डिपेंड करिवो सीमेंट कंटेंट ऊपर ता फ्लोटिंग पे कौन क्वेश्चन पड़ो कोटा फ्लोटिंग पे क्वेश्चन ता केमते आसे फ्लोटिंग पे एबे मैं कहले जोटा हम पट्टा लागि थिबो फ्लोटिंग होची कोन रिमूव ऑल द इरेगुलारिटीज जति सब इरेगुलारिटी अछि स्क्रीडिंग कर साला परे स्क्रीडिंग होची कोन जति कि एक्सेस कंक्रीट को हमें बाहर करबा एक्सेस कंक्रीट जेमेति कि हम्प्स हे गला होलो हे गला माने सपोज गोटे जगह रे अधिका अछि गोटे जगह रे खालो अछि अधिका को बाहर करिके खालो जगह रे पकेबा तो स्क्रीडिंग करि साला परे तापर जति कि सब इरेगुलारिटी रहिला ताको प्लेन करिया कामडा दैट इज अ फ्लोटिंग फ्लोटिंग नॉर्मली इंस्ट्रूमेंट ता देखिथिबो गोटे पट्टाटे थिबो ता ऊपर गोटे हैंडल लागिथिबो मिस्त्री मान नै कि असंती एटा जेमते रिमूविंग हम्प्स एंड होलो आसला सेटा कोन क्वेश्चन आसे सेटा होची इरेगुलारिटीज rough surface तो पहले हला जति सब इरेगुलारिटीज रहिला ताको सब इरेगुलारिटीज माने कोन जोटे टिके हल्का हल्का प्लेन हमकु करियर अछि गोटे होचे हम्प्स को काढिया सेटा हमकु पूरा जणा पडुची किंतु इरेगुलारिटीज ता हम्प्स काढी सल्ला परे आउ ताको जो प्लेन करिवे स्प्रेडिंग परे तापर फ्लोटिंग करिवे 11 compaction of concrete is done to compaction कौन पाई करिवा remove air bubble remove air remove bubbles air bubbles 12
The flaky aggregate is said to be elongated if its length is thrice the mean. ଯଦି flaky aggregate ଅଛି should be less than 0.6 times the mean dimension in case of the flaky. elongated aggregate ହେଲେ କେତେ ରହିବ 1.8 times the dimension. तो ଦି Thrice. ଜଣକୁ ଯଦି ଆମେ combine କରିବା ମାନେ flaky aggregate ମାନେ ଗୋଟେ aggregate ଟା flaky and elongated ତାହେଲେ ତା length ଟା ନିହାତି କ'ଣ ହବା ଦରକାର ଟିକେ ଅଧିକା ହବା ଦରକାର। ତ normally ଆମର କେତେ ଥାଏ 2 times ଥାଏ 1.8 ତାଠୁ ଟିକେ ଅଧିକା ହବା ଦରକାର। ତ 2 ରୁ ଅଧିକା ହେଲେ 3 times। Generally wooden mold are made from wooden mold कोउटा जोटा कि strong काठ थिबो strong काठ कोउटा सबुठु System. शीशम काठ होउची सबुठु strong आ जेतिक सब valuable item गुडा ताको हमें करंती टीक रे लैब इंस्ट्रूमेंट हे गला valuable item होला ताको हमें करबा टीक रे जोटा strong अछि स्पोर्ट्स इंस्ट्रूमेंट वगैरह मलबेरी रे करा जाय स्पोर्ट्स इंस्ट्रूमेंट। 14 Statement 1 कहूचे compass survey is still used by geologists to locate the magnetic orbs ठीक अछि। Statement 2 कहूचे local attraction causes erosion compass survey due to terrestrial feature either natural or man-made। लोकल अट्राक्शन आइदर जदि किछि नेचुरल सब्सटेंस अछि जेमिति कि हमर कोडे पहाड़ अछि सेठी रे आयरन अछि एफई अछि तो ता प्रेजेंस रे लोकल अट्राक्शन हे परिबो attraction of the magnetic substance or due to presence of the electric pole हे गला जोडा कि आयरन सब्सटेंस किछि थिबो आर्टिफिशियल तो लोकल अट्राक्शन मैन मेड पई हे परिबो नेचुरल पई हे परिबो। तो दीटा को स्टेटमेंट ठीक अछि स्टेटमेंट 1 भी ठीक अछि स्टेटमेंट 2 भी ठीक अछि। Both statement 1 and 2 are individually true. Option A है परियो ऑप्शन बी भी ऑप्शन ए दीटा भितर गोटे आंसर आसीबो तो कोडा हो देखो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 करेक्ट एक्सप्लेनेशन अछि कि नहीं से कहउचे कंपास सर्वे इज स्टिल यूज्ड बाय जियोलॉजिस्ट टू लोकेट द मैग्नेटिक ओर्स मैग्नेट जदि गोटे मैग्नेटिक ओर्स माने कोन ओर्स माने खणी माने गोटे पहाड़ रे मैग्नेट अछि मैग्नेटिक ओर्स माने लुहा अछि ताको हमें केमिति जानुचंती जदि लोकल अट्रैक्शन आसिला ता माने एठी अछि ता माने स्टेटमेंट 1 ठीक अछि और स्टेटमेंट 2 होजी तारो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑप्शन ने 1 इज द करेक्ट ए करेक्ट। 15 in the quadrantal bearing system a whole circle bearing देछि 293 डिग्री 30 मिनिट 293 डिग्री 30 मिनिट माने फोर्थ क्वाड्रेंट रहइबो तो ताको हमें केमिति लिखिबा नॉर्थ थीटा वेस्ट होल सर्कल बियरिंग माने सबले नॉर्थ रो क्लॉकवाइज अप टू द सर्वे लाइन आ क्वाड्रेंटल बियरिंग बा रिड्यूस बियरिंग माने होचे आइदर नॉर्थ रो नले साउथ रो आइदर क्लॉकवाइज नले एंटी क्लॉकवाइज जोटा भी पाख हबो। तो 360 रो खाली माइनस कर दबो 293 30 को माइनस कर दबो नॉर्थ 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ 66 डिग्री 30 मिनट टुवर्ड्स वेस्ट इज द करेक्ट आंसर। 16 ट्रू एक्सप्रेशन देछि सेंसिटिविटी होछ हमर सर्वे रो फोन S by S by N ND into D X by ND 62 6 by नॉले alpha is equal to L by R 206265 S होचे स्टाफ इंटरसेप्ट N होचे डिवीजन D होचे डिस्टेंस L होचे लेंथ जोटा कि 2 mm थाए तो को ऑप्शन मैच करछि S by ND 206265 सेकंड। 17 कंटूर्स दे देछि 10 मीटर 30 मीटर 50 मीटर 70 मीटर माने इंटरवल केते दे देला 20 मीटर इंटरवल डिस्टेंस 20 मीटर 20 मीटर इंटरवल हे गला कंसीडर द फॉलोइंग स्केल तुमको देछि 1:20,000 रो देछि स्केल an alignment of a road at a ruling gradient देछि 4% is to be fixed from the point O ruling gradient तुमको दे देला हैला
डिफरेंस केते अछि 20 मीटर अछि तो केते चेंज होउची देखिबो 20 मीटर रे केते अछि 4% ताले डिस्टेंस केते लागे काढी दबो 20 मीटर रे 4% रो चेंज होउची डिस्टेंस होउची केते 20 मीटर तो 20 मीटर रे चेंज होउची 4% व्हाट शुड बी द रेडियस ऑफ द आर्क with O as the center to get the point of alignment of the next contour ताले कौन करिवो डिस्टेंस से पचारची स्केल देइची 1:20,000 तो स्केल दे देइची तो डिस्टेंस गुटे जो एलिवेशन जो चेंज होउची 20 मीटर रे 4 रेट ऑफ केते होउची 4% रो चेंज होउची रूलिंग गाइडेंस देइची 4% तो 20 रे 4% चेंज होउची हैला केते आछी देखो एटा 500 मीटर 500 मीटर तो 500 मीटर तापरे पचारची कोन यूनिट देइची सब सेंटीमीटर रे तो 500 मीटर को सेंटीमीटर रे कन्वर्ट करो सेंटीमीटर 5,000 तो एतिकी सेंटीमीटर रे खाली स्केल को मल्टीप्लाई कर दबो 1/20,000 इनटू एतिकी पाई जबो आंसर 2.5 centimeter. 2.5 सेंटीमीटर ऑप्शन सी 18 the line joining the center of the objective glass to the center of the cross wire center of the objective glass to the center of the cross wire एको हमें कौन कहते लाइन ऑफ Line of collimation. कॉलिमेशन लाइन ऑफ कॉलिमेशन जेतबेले इंस्ट्रूमेंट ता परफेक्टली लेबल रहइबो आ जेतबेले इनक्लाइंड अपवर्ड किंबा इनक्लाइंड डाउनवर्ड ताको हमें कहबा लाइन ऑफ साइट 19 ए टोटल स्टेशन कैन मेजर टोटल स्टेशन साहाय्य हमें सब किछि मेजर कर परिबो Horizontal, हॉरिजॉन्टल vertical, डिस्टेंस distance. वर्टिकल डिस्टेंस सब किछि हम मेजर कर परिबो C. हैला C. हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंस ऑप्शन सी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंगल भी मेजर कर परिबा हॉरिजॉन्टल आ वर्टिकल डिस्टेंस भी मेजर कर परिबा कारण सेतरे कोन लागि थाए ईडीएमआई लागि थाए इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लागि थाए 20 the sensitiveness of bubble tube in a label would decrease sensitiveness कमिबो माने अल्फा अल्फा रे वैल्यू केतेबेले कमिबो जेतेबेले टेंपरेचर बढ़िबो टेंपरेचर बढ़िले अल्फा रे वैल्यू कमिबो सेंसिटिव कमिबो आउ कोन कोन अछि जोथे कमिबो लेंथ ऑफ द ट्यूब जदी कमिला देले कमिबो विस्कोसिटी जदी बढ़िला ताले सेंसिटिव कमिबो देखो को ऑप्शन मैच करछ तो Viscosity सेंसिटिव and ऑफ द temperature बबल one. viscosity and temperature बढ़िले कमिबो को ऑप्शन Diameter of the tube increase हेले sensitivity टा भी कमिबो. diameter of the tube is increased diameter of the tube जदी बढ़िला diameter बढ़ुची माने रेडियस बढ़ुची एटा होचे आर्क टा एको जदी हमें एक्सटेंड करिवा आर्क को जदी हमें एक्सटेंड करिवा ये कोन हबो गोटे सर्कल हबो तो डायमीटर जदी बढ़ुची ताले रेडियस भी बढ़ुची आ रेडियस बढ़ुची माने से कोन होची कर्व रु अधिका फ्लैट जेते कर्व आसीबो जेते माने सर्कल जेते शार्प आसीबो रेडियस सेते कम आसीबो आ रेडियस अधिका आसी माने एटा कोन होची फ्लैट होची तो गोटे केस से फ्लैट अछि फ्लैट हेले सेंसिटिव बढ़िबो ना बेसी कर्व हेले सेंसिटिव बढ़िबो कोन हो आंसर विस्कोसिटी तो ऑप्शन ले देइनी गोटे देइची रेडियस ऑफ द Flat. कर्वेचर ऑफ द इंटरनल सरफेस ऑफ द बबल ट्यूब इज इंक्रीज्ड रेडियस ऑफ द कर्वेचर बढ़िले सेंसिटिव कमिबो आउडे देइची डायमीटर ऑफ द ट्यूब इज इंक्रीज्ड डायमीटर जदी बढ़ुची देन सेंसिटिव कमिबो डायमीटर बढ़ुची माने कोन फ्लैट होची सर S गोटे ट्यूब ऊपर alpha is आ equal गोटे to ट्यूब S तळे by ND हेले सर मते लाଗୁଛି B टा हबो. ए जो डी टा डायमीटर नुहे
D is not diameter, D होचे कौन? डिस्टेंस D डिस्टेंस होचे distance, D होचे जोठी staff रखिच सेउठु distance, that is your D, D is not diameter. Alpha is equal to L upon R 206265, ए जो R एटा होचे radius. सर ए होता है ताले radius of the curvature of the internal surface of the tube is into radius बढ़ले ताले इंक्रीज alpha कमिबो. ऑप्शन ए. 21. latitude ଦେଇଛି, departure ଦେଇଛି, line ଦେଇଛି, the length of लेंथ the ऑफ द line लाइन ପଚାରିଛି. ତାହେଲେ କଣ କରିବ? ଆଗେ error ବାହାର କରିଦବ. summation of latitude ର square समेशन ऑफ departure ର डिफरेंस square पर ର होल root रूट over. ओवर କେତେ ବାହାରୁଛି? latitude ये ମାନେ 100 ର वाली square plus 45.83 ର square ର root over. ପାଖାପାଖି आंसर कर दो. 100 ର square ଏଠି 45 ର square କେତେ ବାହାରୁଛି? 110 110 110. ऑप्शन बी. To change the reading on the circle while measuring an angle कौन करिवा? अपर क्लैम्प टाको लूज करिवा और लोअर क्लैम्प टाको टाइट करिवा. Right. अपर क्लैम्प को लूज करिवा, लोअर क्लैम्प को टाइट करिवा. 23. Two straight lines intersect at an angle 60 degree. The radius of the chord joining the straight lines is 600 meter. The length of the long chord and mid ordinates in meters. Long chord पचारछि माने chord length केते पचारछि. chord length ର फॉर्मूला कोन? 2 into r into sin delta by 2. delta होछि deflection angle. deflection angle केते देछि? 60 degree देछि. तो 2 into radius देछि 600 into sin 30 degree. sin 30 degree जे 1 by 2 2 2 कटि गला. chord length हे जो तमरो 600 मीटर. तो chord length 600 मीटर. बी सी भितरु गोटे ऑप्शन. तापर मिड ऑर्डिनेट पचारछि. मिड ऑर्डिनेट माने होछि कोन? r minus r cos delta by 2. 600 minus 600 into cos 30. तो 600 ରୁ माइनस कर दियो. 600 into cos 30 जगह √3 by 2 ହେଲା. अब फार्मूला जदी मने रहउनी जो कहतले आगे डायग्राम ड्रा कर देबो. जहार भी फार्मूला मने रहउनी डायग्राम ड्रा कर देबो, इजी होबो. ହେଲା. तो एटा होची रेडियस और टांजेंट. तो एंगल टा होची 90 डिग्री. अगेन ए एंगल टा होची 90 डिग्री और एटा होची कॉर्ड लेंथ t1 t2. t1 t2 होची कॉर्ड लेंथ, ये होची मिड ऑर्डिनेट. 24. स्केल ऊपर वर्टिकल फोटोग्राफ ऊपर एथरो क्वेश्चन आस्थिला लास्ट एग्जाम. A vertical photograph was taken at an altitude of 1500 meter above the mean sea level. Above the mean sea level माने ताल तमु कौन दे देला? कैपिटल H कैपिटल दे एच देला. कैपिटल H रो वैल्यू होची 1500. If the focal length of the camera f रो वैल्यू दे देला 20 मीटर. देखो इजी फार्मूला, बाकी एठी खाली मार्क करिवो 20 मीटर की सेंटीमीटर. यूनिट को चेक करिवो. यूनिट बेले बेले अलगा दे थाए. f रो वैल्यू दे देला. स्मॉल h रो वैल्यू केते देछि? 500 मीटर. तो सिंपल खाली स्केल रो फार्मूला पुट कर दो. फोकल लेंथ बाय एफ कैपिटल F डिवाइडेड माइनस बाय स्मॉल h. माइनस स्मॉल एच. जेतु सब यूनिट सेम अछि मीटर देछि, खाली हमें माइनस कर दो. 1500 माइनस 500 1 by 50. एथर आस्थिला 25. इन यूलर्स इक्वेशन को जदि हमें डेरिवेटिव करिया बर्नौलीज इक्वेशन पाइथां. तो यूलर्स इक्वेशन ले कौन थाए? नो फोर्स. फोर्स तो नेग्लेक्ट होता है. फोर्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, टर्बुलेंस एंड वेलोसिटी v स्क्वायर बाय 2g ये सब नेग्लेक्टेड. ऑप्शन डी. यूलर्स इक्वेशन को डेरिवेटिव करिया पाइबा बर्नौलीज इक्वेशन.
26. A plate 0.025 mm distance from a fixed plate moves at a velocity दे देला 60 centimeter per second and requires a force of 0.2 kgf per meter square to maintain this speed. The dynamic viscosity of the fluid between the plates will be Newton's law पके दो. Shear stress is equal to mu into velocity gradient du upon dy dy है. तो 0.2 kgf पर मीटर स्क्वायर तमन तुम shear stress दे दीची समथिंग पर मीटर स्क्वायर माने कौन टा स्ट्रेस रो यूनिट तो shear stress तुमको दे दीची दैट इज योर 0.2 आ एठी देखो यूनिट सब अछि सेंटीमीटर स्क्वायर रे किंतु एठी यूनिट अछि कोउथिरे मीटर स्क्वायर रे तो एठी आगे सांग सांग कोन करबो यूनिट को कन्वर्जन कर देबो परे पुन असुविधा हो 0.2 into 10 to the power minus 4 kgf per centimeter square तापर खाली न्यूटन्स लॉ पुट कर दो 0.2 into 10 to the power minus 4 will be equal to dynamic viscosity into du upon dy. Change in velocity क्वेश्चन देइछि कते 60 सेंटीमीटर पर सेकंड तो एटू म्यू रो वैल्यू पाइ जिवो म्यू इज इक्वल टू 0.2 into 10 to the 10 to the power power minus 4 into distance देइछि 0.025 mm ताकू सेंटीमीटर रे कन्वर्ट करिवो गोटे सेंटीमीटर जे 10 mm 0.0025 divided by 60. This is your answer. (27) One poise is equal to what? Poise होउछ हमर CGS unit. One poise जे केते 0.1 0.1 pascal pascal second. second 28 In a supersonic flow a diffuser होउछ velocity को कमेया पई diffuser कोन पई यूज करा जाय in supersonic flow माने Mach number केते थिबो Mach number जदि equal to 1 हैला sonic flow less than 1 हैला subsonic flow 0.6 greater than 1 हेले greater than 1 हैले supersonic flow supersonic greater flow than 4 किबा 5 हैले hypersonic flow तो सुपरसोनिक फ्लो रे डिफ्यूजर कोन पे यूज करा जाय वेलोसिटी को कमेवा पई तो वेलोसिटी को कमेवा पई हेले सितरे कोन रहइबो तमरो डिक्रीजिंग एरिया रहइबो ना इंक्रीजिंग एरिया रहइबो डिक्रीजिंग रहइबो ना decreasing इंक्रीजिंग area increasing area रे decreasing इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नले इंक्रीजिंग दीटा भीतर गोटे ही ऑप्शन वेलो देखो गोटे सुपरसोनिक फ्लो रे हम डिफ्यूजर कोन पे यूज करछंदी वेलोसिटी को कमेवा पई ना तो जले वेलोसिटी को हमें कमेवा गोटे होची ग्रेजुअली डिक्रीजिंग एरिया आइदर ए ऑप्शन ढा हबो न होले इंक्रीजिंग एरिया गोटे बढ़ुची आ गोटे होची एरिया कमुची कोउथिरा में वेलोसिटी को कमे परिबो area body ग्रेजुअली डिक्रीजिंग एरिया सो दैट कि रेजिस्टेंस मिलिबो एटी पिटी होबो रेजिस्टेंस मिलिबो तो ग्रेजुअली डिक्रीजिंग एरिया एक्चुअली गोटे कंप्रेसिबल फ्लो रे कोन थाए dA with respect to A is equal to Mach number the square minus 1 by v into dv तो जेहेतु हमको डिक्री वेलोसिटी को कमियार अछि तो dv लेस देन 0 त माने नंबर ग्रेटर देन 1 दैट इज योर सुपरसोनिक फ्लो तो एरिया को हमको कमे पे पड़िबो लेस देन 0 दैट इज योर डिक्रीजिंग एरिया 29 center of the buoyancy always coincide with the center of the volume of fluid displaced B very good option B 30 the increase in metacentric height जते अधिका रहइबो सेते भलो किंतु डिस्कम्फर्ट फील होबो तो decreasing increases the the stability stability decreases the comfort of passenger 1 and 4 4 option B 31 assertion कोन कहूची a loss of head at a sudden contraction in a pipe is smaller than that a sudden expansion hello
तो जदि लॉस ड्यू टू सडन एक्सपांशन देखियो दैट इज योर v1 माइनस v2 रो स्क्वायर बाय 2g लॉस ड्यू टू सडन कंस्ट्रक्शन होची 0.5 into v बी square by स्क्वायर बाय 2g 2g ताले कौन होबो आंसर loss of head at a sudden contraction in a pipe is smaller than sudden expansion ठीक अछि when the flow contracts it tends to become irrotational एटा किंतु भूल अछि से कोचे तमे कॉन्ट्रैक्ट करबा फ्लोटा इरोटेशनल हे जिवो सेमिति किछ नथाय ताले a is true but r is false 32 डिस्चार्ज क्यू देछि स्पेसिफिक स्पीड रो फार्मूला पके देबा कोटा होची टरबाइन पई आउट होची पंप पई स्पेसिफिक स्पीड रो फार्मूला होची कोन n into q रो रूट ओवर बाय h to the power 3/4 4 स्पेसिफिक स्पीड से कोचे डिस्चार्ज हे गला अधा ताले q जगह रे q by 2 हे जिवो q जोठी अछि सेठी हे जिवो q by 2 रो रूट ओवर डिवाइड बाय h to the power 3/4 ताले खाली q by 2 रो जो रूट ओवर हे गला तो खाली रूट 2 टर्म्स उडे एक्स्ट्रा आसीबो एठी जहा थिला सेया रहइबो खाली उडे रूट 2 टर्म्स एक्स्ट्रा आसीबो तो ns by रूट 2 हे जिवो आंसर हे जिवो जहा भी स्पेसिफिक स्पीड आगु थिला सेतरे खाली रूट 2 गोटे एक्स्ट्रा हरि जिवो ns by रूट 2 ताले ऑप्शन नाही माने नॉन ऑफ देबो ऑप्शन डी ns by रूट 2 होबो 33 method of irrigation in which water is applied in the form of स्प्रिंकलर spray इरिगेशन sprinkler स्प्रिंकलर 34 select the correct statement from the followings एमान भितरु कोटा ठीक बोली पचाउची कोटा ठीक the portion of first option देजी the portion of pellicular water which remains unutilized is called hygroscopic water ठीक अछि हाइड्रोस्कोपिक वाटर माने जोटा सराउंडिंग हेकी थाए कैपिलरी वाटर टाइम यूज हेता है सर द मॉइस्चर कंटेंट पेल्कुलर वाटर टा सर कोन ऑन यूटिल कोटा एटा पेल्कुलर वाटर टा एटा होची एक्चुअली वर्ड होची पेलिकुलर पेलिकुलर वाटर माने जोटा कि यूटिलाइज हेई नथिबो सॉइल रो सराउंडिंग रे थिबो और सॉइल रो प्लांट सरफेस द्वारा तार यूटिलाइजेशन हे नथिबा सराउंडिंग रे थिबो तापर बी कहूची तो मॉइस्चर कंटेंट एट व्हिच परमानेंट विल्टिंग ऑफ प्लांट्स टेक्स प्लेस इज कॉल्ड विल्टिंग पॉइंट ए भी ठीक अछि बी भी ठीक अछि माने ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन दीटा को ठीक हला माने ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन आर एबव करेक्ट 35 द टर्म कंजप्टिव यूज cu कंजप्टिव यूज माने कोन कंजप्टिव यूज ऑफ द वाटर का कुआ जाय लॉस ऑफ द वाटर एज डेप्थ ड्यू टू ट्रांसपिरेशन आउट होची लॉस ऑफ द वाटर ड्यू टू इवापोरेशन ए और बी 36 the uplift pressure on a upstream floor of hydraulic structure determined by Bleek's theory as compared to Kosla's theory is कौन हो less uplift pressure जदि हमें कंपेयर करिबा ब्लिक्स आउ कोस्ला ताले ब्लिक्स रो कम आसीबो कंपैरिजन टू कोस्ला 37 the maximum scour depth d maximum for the condition of flow at noses of piers केते maximum flow different case पाई normally थाए maximum is equal to k into d d होची कोन normal scouring depth k होची गोटे constant जोटा कि डिपेंड करे types of the river flow ऊपर maximum scour depth for condition of flow at noses of piers देची तो in case of the noses of the piers तो सेठी केते थाए 2 थाए 2 times option b 38 type of cross drainage work in which the bed level of drainage is much above माने नदी अछि केनाल ऊपरे ताको हम कोन कहबा
aqueduct, सुपर पैसेज तो केनाल अछि siphon नदी aqueduct ऊपर कौन दाले एक्विडक्ट केनाल अछि नदी ऊपर दैट इज योर एक्विडक्ट आ साइफोन आगे एक्विडक्ट होउची जदि नदी रे एटा हो सपोज सिंपल रिवर एटा होउची केनाल एटा होउची एक्विडक्ट साइफोन एक्विडक्ट माने होउची साइफोनिक एक्शन रे पानी जाउथबो माने हमें कोन करिवा नदी टाको टिके खोली दबा नदीर बैंक पर्सन को जो बॉटम पर्सन को खोली दबा पानी बर्तन कौन जीवो साइफोनिक एक्शन रे जीवो सेही सेम एक्विडक्ट रहिला किंतु एक्शन हे गला साइफोन सेति पय नाम हे गला साइफोन एक्विडक्ट एक्विडक्ट माने होउची केनाल रहिबो नदी ऊपर जदि साइफोनिक एक्शन ले पानी गला ताको हम कहबा साइफोन एक्विडक्ट जदि नदी रहिला केनाल ऊपर दैट इज अ सुपर पैसेज दीटा को सेम लेवल रहले ताको हम कहबा लेवल क्रॉसिंग 39 the temperature at which the air mass just becomes saturated if cooled at a constant pressure with moisture neither added nor removed is called the dew point, dew point ताको हम कहबा dew point जदि कूल होउची गोटे कांस्टेंट प्रेशर रे कूल होउची ताको हम कहबा dew point 40 rainfall simulators are used to determine what rainfall simulators हमें कौन पे यूज करती इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी पे हमें यूज करती रेनफॉल सिमुलेटर 41 the direct runoff hydrograph of a storm obtained from a catchment is triangular अछि माने half into base into height is triangular in the shape with base दे देछि 400 hours and the peak flow top flow ए वैल्यू दे देछि 50 centimeter per मीटर क्यूब पर सेकेंड आउ एरिया तुमको दे देछि आगे फास्ट कौन काट दबो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट कर देले पाई जिवो एरिया अंडर द कर्व आउ डिवाइडेड बाय कैचमेंट एरिया कर देले पाई जिवो तुम रेनफॉल केते ताले रेनफॉल इज इक्वल टू हाफ इनटू half बेस देछि 400 केते into 400 इनटू 50 50 हैला एठी divide देछि by 2 आवर अछि एठी यूनिट देखियो एठी अछि आवर अछि एठी अछि सेकेंड तो कौन करिवो 60 into 60 डिवाइड बाय केते अछि कैचमेंट एरिया 300 किलोमीटर स्क्वायर तो ऊपर अछि मीटर रे तळे अछि किलोमीटर रे तो कन्वर्ट कर देबो 300 into 10 to the power 6 मीटर स्क्वायर दिस इज योर आंसर इफेक्टिव रेनफॉल 42 A tropical anticyclone in the northern hemisphere is a zone of what? high pressure Tropical clockwise anticyclone. High pressure with clockwise wind. high pressure with clockwise. flow. 43. The daily per capita consumption of water apparently increases with per capita consumption टा common sense क्वेश्चन टा per capita consumption केमिति पड़े जदि मो स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग जदि मते अधिका रहिला मो अधिका पानी रिक्वायरमेंट करिवि तो हायर स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग अवेलेबिलिटी ऑफ द दीटा सीवरेज इन द सिटी दुई भी हबो मीटर टा हेले कमी जीवो मीटर हेले थार एटा चारिटा हबो चारिटा होलसम आवश्यक एंड पोर्टेबल क्वालिटी माने भलो भलो पानी मिलुची तो फर्स्ट आई सेकंड आई 4 1 2 4 डी the 3 ଅଛି D 1 2 4 option D 44 bacteria which use carbon dioxide as a source of carbon are known as what carbon dioxide को जे यूज करन ताको हम कोन कहबो सोर्स ऑफ कार्बन सी है तो जो बैक्टीरिया जे कि कार्बन डाइऑक्साइड को एज ए सोर्स ऑफ द कार्बन यूज करछि ताको हम कहबा ऑटोट्रॉपिक ऑटोट्रॉफिक तो सी तरह क्वेश्चन कौन डाले सी होछि हेटेरोट्रॉफिक
सी होची हेटेरोट्रॉपिक जे अन्य मान जे निजे करि परिबोनी आउ काहा पर डिपेंड करिवो माने CO2 को से ब्रेक करि पारने आउ काहा पर डिपेंड करछि ऑटोट्रॉपिक माने जेमिति जे निजे करि पाउछि ब्रेक डाउन करि पाउछि CO2 रु से निजे कार्बन को नै पारुछि आज्ञा 45 मैच द फॉलोइंग अल्कालिनिटी का से रिलेटेड होबो अल्कालिनिटी का से रिलेटेड होबो आगे फास्ट जोड़ा जणा अछि सेटा देखि दो एथिरे मैच द फॉलोइंग रे जोड़ा जणा अछि ताको आगे देखि दो देखियो ऑप्शन मैच कर जिवो आगे फर्स्ट होछि EDTA का से हार्डनेस रिलेटेड हार्डनेस 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 बीटा EDTA हे वाला गोटे हार्डनेस देछि 2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का से रिलेटेड स्टूडेंट H2SO4 अल्कालिनिटी तो A होची 3 B होची 4 A3 बी गोटे ही ऑप्शन अछि A3 तो ऑप्शन B हे वाला आगे देखिए होकनी C हे वाला 1 D हे वाला 2 46 टू सैंपल्स ऑफ वाटर गोटे होची A आउट होची B जनकर pH वैल्यू होची 4.4 आउ जनकर pH वैल्यू होची 6.4 हाउ मेनी टाइम्स मोर एसिडिक माने कोन करबो H+ कंसंट्रेशन बाहर करबो तो H+ कंसंट्रेशन सैंपल A रे केते हे जिवो 10 टू द पावर -4.4 कारण pH माने होची पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन दैट इज योर माइनस लॉग H+ आयन लो कंसंट्रेशन तो pH जगह रे पुट करिवो केते 4.4 इज इक्वल टू माइनस लॉग H+ आयन लो कंसंट्रेशन तो लॉग को लॉगारिथम को जदि हमें हटेबा 10 टू द पावर करिया पड़िबो देन H+ आयन लो कंसंट्रेशन केते भाला 10 टू द पावर -4.4 फॉर A सैंपल पाई A सैंपल पाई 10 टू द पावर -4.4 B सैंपल पाई 10 टू द पावर -6.4 तो केते टाइम्स पचारछि त माने 10 टू द पावर -4.4 divided by 10 to the power -6.4 तो 10 to the power A by 10 to the power B केते हे जो 10 to the power A minus B 10 to the power 2 हे जो एटा 100 जे 100 बोलते गुणा 100 टाइम्स ऑप्शन सी 47 the desirable limit of chloride content as per BIS standards in water for domestic supply should not exceed what chloride content देइछे should not exceed desirable 50 माने 250 मिलीग्राम पर लीटर 48 which of the following is not an advantage of chloramines ammonia treatment of water chloramines ammonia treatment NaCl2 एटा होची कंटामिनेशन पई रखा जाय तो क्लोरामाइन्स अमोनिया ट्रीटमेंट रो ସେଇଟା ସାର୍ କେତେ ହେଲା RPM ସାର୍ କେତେ RPM ସୁବିଲାନି ଟିକେ RPM 250 ଆଜ୍ଞା 250 ppm parts per million बा मिलीग्राम पर लीटर ସାର୍ ସାର୍ 48 होची से कहूची नॉट एन एडवांटेज जदि हम एडवांटेज देखिया क्लोरामाइन्स रो काम होची कोन गोटे तो होची फ्यूचर कंटामिनेशन पई से हमर क्लोरीन को स्टोर को रखिथिबो किछि माने टेस्ट खराब करिवोनी कि ऑर्डर भी माने किछि बैड ऑर्डर प्रोड्यूस करिवोनी कोनोसी फ्यूचर रे जदि किछि कंटामिनेशन होला ता पई से सेफ्टी प्रोवाइड करिवो तो से कहूची कोटा एडवांटेज नुहे लेस इफेक्टिव देन क्लोरीन एलोन एटा ही होची not an advantage it prevents advantage there is no danger of overdose eta भी होची ठीक अछि quantity of chlorine required is reduced especially if organic matter is present in large amounts तो D भी ठीक अछि ऑप्शन ए हो आंसर 49 the short circulating occurring in a sedimentation tank is represented by कहा ठीक है साहाଯ୍य में रिप्रेजेंट रीसर्कुलेशन करते रेशियो रीसर्कुलेशन रेशियो कहा साहाଯ୍य में डिस्क्राइब करते शॉर्ट सर्कुलेटिंग occurring in a sedimentation tank रीसर्कुलेशन रेशियो माने होची जते रिटर्न करची कहा साहाଯ୍य में देखंती सर्कुलेटिंग समस्त आंसर गोटे
recirculation ratio option C शॉर्ट सर्किटिंग आम सेमती देखती शॉर्ट सर्किटिंग आम केमी देखती केते फ्लो है बाय तार डिटेंशन टाइम केते दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसी डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसी हेल्प रे देखती तो शॉर्ट सर्किटिंग जो भी कंडीशन होता है जो ऊपर लेयर रे होता है जो फ्लो करुच्ची तो सी केते डिटेंशन टाइम तार कमी गला केते तार कमी गला विथ रेस्पेक्ट टू बॉटम लेयर से अनुसार आम देखती सेडिमेंटेशन टैंक रो जो शॉर्ट सर्कुलेटिंग होची विथ रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसी कौन फ्लो थ्रो पीरियड बाय थियोरेटिकल डिटेंशन टाइम इनटू 100 परसेंटेज देखते डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसी जियोलाइट प्रोसेस कौन पे यूज करा जाए remove the परमानेंट हार्डनेस ऑप्शन ए टेम्पररी तो बॉइलिंग दे बाहर जी